राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ऊपर को गुलीमाड़ उद्यम होटेल में फुटिला 4 ରୁ 6 राउंड गुली वाशिंगटन हिल्टन होटेल में गुली चालना रात्रि भोजन पर होटेल ले ट्रंप उपस्थित थिले सहित उपराष्ट्रपति जेडी वांस उपस्थित थिले उपराष्ट्रपति जेडी वांस अन्य वरिष्ठ अधिकारी से होटेल ले रात्र भोजन पर उपस्थित थिले 30 वर्षीय कैलिफोर्निया युवक को काबू करिसेंती सुरक्षाकर्मी संदिग्ध निकट को एकाधिक अस्त्र जबत होईछि गुलीमाड़ जड़े सुरक्षाकर्मी आहत होइछंती गुलीमाड़ पर सुरक्षाकर्मी माने तुरंत ट्रंप को घेरी जाइथिले तांको सुरक्षित स्थान को नहीं जाइथिले किछि समय पई सेठारे आतंक खेली जाइथिला डिनर पार्टी उपस्थित लोक माने जीवन बंचाइबाकू टेबुल तळे लुचि जाइथिले गुलिकांड पर राष्ट्रपति ट्रंप सुरक्षाकर्मी प्रशंसा करिसेंती आमे आतंकवादी को धरि नेइछु सुरक्षाकर्मी माने मो जीवन रक्षा करिसेंती अन्यपटे जे होटेल ले डिनर पार्टी चलीथिला ता बाहर विक्षोभ देखिबाकू मिलिछि विक्षोभकारी माने हातरे नो वार प्लाकार्ड धरिथिबा देखिबाकू मिलिछि 2024 रे ट्रंप को ऊपर को गुलीमाड़ होइथिला एक निर्वाचन रैली को संबोधित करुथिबा बेले ट्रंप को ऊपर को गुलीमाड़ होइथिला सेते बेले भी गुलीमाड़रू अल्प के बर्ती जाइथिले ट्रंप गुलीटी तांको कानरे घसी होई पळाइथिला एबे वर्तमान जो घटना सामना को आसीछि ता सीधा सड़क ट्रंप को सुरक्षा व्यवस्था प्रति गोटे बड़ प्रश्नवाची सृष्टि करुछि होटेल रे 4 ରୁ 6 राउंड गुली फुटिला वाशिंगटन हिल्टन होटेल रे जेते बेले रात्रि भोजन पई निजे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उपस्थित थिले उपराष्ट्रपति जेडी वांस थिले अन्य वरिष्ठ अधिकारी माने उपस्थित थिले हठात से समय रे 30 वर्षीय कैलिफोर्निया युवक गुलीमाड़ करथिले 4 ରୁ 6 राउंड गुलीमाड़ करथिले एवं संदिग्ध को वर्तमान काबू करा जाइछि संदिग्ध निकट एकाधिक अस्त्र जबत होइछि गुलीमाड़ जने सुरक्षाकर्मी आहत होइछंती चारिटी दृश्य देखंतु आपण जो चारिटी दृश्य आमे आपनको देखौछु प्रथमतः होटेल भितर गुलीमाड़ दृश्य एवं ता परे तुरंत किपरि राष्ट्रपति को पूरा सुरक्षा प्रोटोकॉल भितर एवं घेराबंदी करी तांको से स्थान अन्यत्र स्थानांतर करा जाउछि अन्य पखरे आपण देखुछंती बाहर पुलिस छाउनी कहीं बाहर विक्षोभकारी माने नो वार नहीं कि से विक्षोभ करुछंती से बारंबार विरोध करुछंती काहे कि युद्ध स्थिति सामना को आछि एवं अमेरिका राष्ट्रपति एई आभिमुख्य को A tape showing the violence of this thug that attacked our Constitution and also showing how quickly Secret Service and law enforcement acted on our country's behalf. Really did a great job. One officer was shot but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun and the vest did the job. I just spoke to the officer and he's doing great. He's in great shape. He is has very high spirits and we told him we love him and respect him. And he's a very proud guy. He's very proud of what he does, Secret Service agent. And we looked at all of the conditions that took place tonight and I will say, it's not a particularly secure building and I didn't want to say this but this is why we have to have all of the attributes of what we're planning at the White House. It's actually a larger room and it's much more secure. It's drone proof, it's bulletproof glass. We need the ballroom. That's why Secret Service, that's why the military are demanding it. They've wanted the ballroom for 150 years for lots of different reasons, but today's a little bit different because today we need levels of security that probably nobody's ever seen before. But everyone owes a tremendous debt of gratitude to the courage of law enforcement, the law enforcement and working with the DC police, and we just spoke with the mayor. मैं इस वक्त वाशिंगटन डीसी के हिल्टन होटल के बाहर हूँ जहाँ कुछ ही देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप हमारे साथ डिनर कर रहे थे और सडनली हमने आवाज़ सुनी जैसे कि कुछ डिशेस क्लैटर हुए जैसे मैंने मुड़कर देखा तो सर्वर्स जो हैं वो अपनी ट्रेज लेके अंदर की तरफ भागे और उसी वक्त मुझे लगा कि कुछ सही नहीं है और कुछ सिक्योरिटी लैप्स हुई है इस टाइम पर सारे लोग जो हैं जो टेबल्स पे अपना डिनर कर रहे थे फर्स्ट कोर्स कर रहे थे वो टेबल के नीचे छुपने की कोशिश कर रहे थे ग्राउंड पे लेट गए ये कुछ तकरीबन 5-10 मिनट ऐसे चलता रहा और जैसे मैं उठी और जैसे मुझे लगा कि अभी मैं सेफ
हूँ तो मैंने स्टेज की तरफ देखा तो उतने में प्रेसिडेंट ट्रंप को सबसे पहले सिक्योर कर दिया गया था। जो फर्स्ट लेडी है मेलानिया ट्रंप उन्हें भी लेके चले गए थे वहां से एक सेफ जोन पे। और तकरीबन 12-13 मिनट के बाद जो कैबिनेट मेंबर्स हैं स्कॉट बेसेंट थे, पीट हेग्सेट थे, काश पटेल थे, जो जिन्हें मैं थोड़ी देर पहले ही मिली थी और हम कैजुअली बात कर रहे थे, उन्हें बाहर निकाला गया। कैरोलाइन लेविट को बाहर निकाला गया। जो सारे बेसिकली कैबिनेट के मेंबर्स हैं उन सभी को यहाँ से निकाला गया। और तकरीबन 30-35 मिनट्स के बाद पूरी जो होटल है उसको सील कर दी गई थी। सील करने के बाद एक अनाउंसमेंट हुई कि ये जो प्रोग्राम है अब बंद कर दिया जाएगा और इसे वापस पोस्टपोन कर दिया जाएगा जहां प्रेसिडेंट ट्रंप वापस आएंगे। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट की है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी जो अभी व्हाइट हाउस में होने वाली है। सो ओवरऑल ये डेफिनेटली एक सिक्योरिटी लैप्स है कहीं ना कहीं कि एक गनमैन जो है एक गन लेकर इतनी सिक्योर जगह में आके और उसने फायरिंग की है। आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा सारी डिटेल्स का इन द नेक्स्ट मे बी 1 आवर। सहयोगी प्रज्ञा अच्छा आम सहित सविशेष सूचना एक्सक्लूसिव फुटेज भी आप देखुं। प्रज्ञा केमी कौन ये घटना घटला एवं यार कहा कौ जिनस सहित लिंक आम देखी अमेरिकार भी विरोध करा गोटे पटे युद्धर स्थिति अच्छी अमेरिका राष्ट्रपति ताकू भी मुहांमुही स्थित अच्छा दुईटी स्थान में गोटे यूक्रेन रूसिया युद्ध कथा कहतु कि एपटे जो स्थिति इस्राएल अमेरिका मिसिकी जमी भाव ईरान सहित स्थिति अच्छा तो पूरा पूरी घटना को क्यों घटना सहित लिंक करा जाउछि पूरा अपडेट कौन आसनी देखो बर्तमान ये जो पूरा घटना घटी ये व्हाइट हाउस अर्थात जो राष्ट्रपति भवन अच्छी अमेरिकार से जगार एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस थिला अर्थात वार्षिक प्रेस को मतलब सांबादिक सम्मेलन थिला जो थे डोनाल्ड ट्रंप अभिभाषण रखि था सबु प्रकार जो मैंने सांबादिक अच्छा से एकत्रित होते जो मैंने वरिष्ठ नेता अच्छा से उपस्थित होते जमीक आम देखिपुर जहाँ विजुआल अच्छा ट्रंप पत्नी मेलानिया ट्रंप से उपस्थित अच्छा जेडी वैंस एवं काश पटेल एमाने समस्ते से विजुआल दर्शन माने नजर आसुचंती समस्ते उपस्थित अच्छा डिनर पार्टी गोटे चली डोनाल्ड ट्रंप संबोधन करते किंतु हठात कौन है ना गुलीर शब्द शुभिला कहीं किसी बुझीपार न परवर्ती समय डोनाल्ड ट्रंप को एस्कॉर्ट करके सुरक्षित जगह को नियागला। यार पूरा विजुआल बर्तमान रेकर्ड होती से दृश्य मुझे आउ थे देखिए दूसरी जे पूरा घटना केमी थिला ना ये देखो ये मीटिंग पाई समस्ते बसी डिनर चली तले बहुत जन बस स्टेज होती मंचरे डोनाल्ड ट्रंप बसी मेलानिया ट्रंप भी सांगे अच्छा तेणु ये समय भितर हठात धाँ दौड़ स्थिति लगी रहा तो से किसी बुझा आगु जड़े सिक्यूरीटी गार्ड जी सिक्रेट सर्विस ये ट्रंप को सामने पूरा कांथ भली ठिया जाऊँ सुरक्षा देवाई परवर्ती समय धीरे धीरे से जगह को सुरक्षित जो सिक्रेट सर्विस एजेंट मैंने अच्छा से सुरक्षित जगह को नहीं जाऊँ से जगह को इवाकुएट कराऊँ अर्थात खाली कराऊँ। तो ये जो पूरा घटना घटिला ये हठात बैठक चली डिनर पार्टी चली से ही समय प्रथमे बंदूकर गुली फुटबार शब्द शुभिला जहाँ को प्रथमे नोटिस कले मेलानिया ट्रंप जी की डोनाल्ड ट्रंप पत्नी परवर्ती समय डोनाल्ड ट्रंप जाना पाइले कि गोटे घटुची कौन घटुची से किसी ए वीडियो जना पड़ुचे सी जापी बोली कि हठात धाँ दौड़ कर जो सिक्रेट सर्विस अर्थात जो मैंने सिक्यूरीटी पर्सनल मैंने अच्छा से पहुंचुंट डोनाल्ड ट्रंप को से सुरक्षित भाव में से जगार बाहर को नौ परवर्ती समय जी गुली करथिला से गुली माड़ करथिबा दुर्बृत्त ताकू मैंने धरी नहीं आ प्रथमे से दुर्बृत्त जनक जो से भीतर को पशिले आग सिक्यूरीटी जो एजेंट मैंने अच्छा सुरक्षाकर्मी जो मैंने अच्छा को गुली चलाई आ सौभाग्यवशतः सी जेहेतु बुलेट प्रूफ जैकेट पिंधिले कौन क्षति होई नाही। आ एक निजे डोनाल्ड ट्रंप कहते अर्थात ये जो पार्टी थिला ये जो डिनर पार्टी चलता परवर्ती समय सांबादिक सम्मेलन होता डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित से जगार बाहर कर नियागला। डोनाल्ड ट्रंप किसी समय से सुरक्षित जगह रहिले और परवर्ती समय कहले जे मु अध घंटा भितर पुणी थे गणमाध्यम सामना को आसबि और सविशेष सूचना देवी जे कौन एबे घटीगला। परवर्ती समय में टिके आगु शुणुलु डोनाल्ड ट्रंप से प्रतिक्रिया कारण ये बर्तमान एबे रही किसी घंटा पूर्वर घटना तेणु डोनाल्ड ट्रंप सांबादिक सम्मेलन कले सामना को आसिकी बयान रखिले और घटना संपर्क में बतैले और कहले जे ये जो आक्रमण होइछि से आक्रमणकारी बहुत भयंकर देखा जाउथिले घर कैलिफोर्निया बोली ठाब करा सरलानी और गोटे टीम
कैलिफोर्निया भी पहुंची सारानी से व्यक्ति अधिक डिटेल्स काढ़ापी जे सी कौटिकार कौन उद्देश्य केते कौन पाई डोनाल्ड ट्रम्प को से आक्रमण करने को चेष्टा कले आउ डोनाल्ड ट्रम्प एक कथा मध्य कहते जे सी जितेबाला भीतर को प्रवेश करते पाखे विपुल परिमाण अस्त्र शस्त्र थिला अर्थात बंधुक थिला आहुरी भी कौन कौन थिला से कथा मेंशन करना केवल कहले जे विपुल अस्त्र शस्त्र थिला ताकू नेकी से सशस्त्र से डिनर पार्टी भितर पशिले तेणु गुली कले गुली कर सारा पर धरी निआई वर्तमान पुलिस कस्टडी में रखा जांच हम आ वर्तमान सुधा जहाँ जमापड़ी से दुर्बृत्तों विषय सी 31 वर्षीय आउ कैलिफोर्निया तेणु ये जो वर्तमान गुलीमाड़ ये गुलीमाड़ बेस आश्चर्य भी लगुच हाईली सिक्योरिटी एरिया सी कना व्हाइट हाउस जहाँकि राष्ट्रपति भवन से जगार फेरी फेरी से आखपाख अंचल को कड़ा सुरक्षा भितर रखाई थाए तारी भितर पुणी डोनाल्ड ट्रम्प सांबादिक सम्मेलन हवा जाऊँगी गोटे डिनर पार्टी आयोजन होती तेणु से जगह को भी आहरी सुरक्षित कराई से जगह विभिन्न सुरक्षा सूचना मिली कि जो होटेल जो हिल्टन होटेल डिनर पार्टी आयोजन होता बाहर भी लोक मैंने विक्षोभ करुले विक्षोभकारी विक्षोभ करुले हाथ में नो वार प्लाकार्ड जहाँ को लेकिन आम किसी दिन तले देखी अमेरिकार स्थिति 50 रु अधिक राज्य जो भाव में सेठारे विद्रोह एवं विरोध करा अमेरिकार नीति को एवं डोनाल्ड ट्रम्प नीति को युद्ध अभिमुख्य तेबे ये सहित लिंक माने नो वार प्लाकार्ड धरी कहीं जड़े विक्षोभकारी भीतर को पशिक एमती कांड भी कि देखो वर्तमान समय किसी भी कहवा संभव हम ना कहीं डोनाल्ड ट्रम्प एमती भी जो युद्ध को लेकिन ऑलरेडी जो थिला पॉपुलैरिटी सी वर्तमान ह्रास पाई जाऊँगी अनेक रिपोर्ट प्रकाश पाँच ये अमेरिकार जिते राष्ट्रपति होती ये डोनाल्ड ट्रम्प प्रथम जहाँ एत अप्रुवल रेटिंग बहुत कमी जाइए एक बयान आम देखुलु तेणु डोनाल्ड ट्रम्प ऑलरेडी देश भितर विरोध कराला तेणु हुए तो कहीं जड़े सेमती थी पारती मनरे चिंताधारा जे हुए तो सी भावी नौथे ट्रम्प को एत सब कांड होती से आक्रमण करने को चली आसते किसी भी पारे से व्यक्ति कहीं भी पारती तेणु किंतु बड़ प्रश्न होते सुरक्षा बलय कारण 2 ରୁ 3टा लेयर सुरक्षा थी राष्ट्रपति जेहेतु जगह उपस्थित थे सी भी अमेरिकार राष्ट्रपति तेणु ताकू भेद करके बंधुक नहीं भितर पशिबा ये भी बेस आश्चर्य लगुच पूरा घटना किंतु जहाँ भी हो ये वर्तमान डोनाल्ड ट्रम्प सुरक्षित अच्छा पत्नी सुरक्षित अच्छा पूरा टीम काश पटेल ठू आरंभ करके जेडी वांस ये समस्त सुरक्षित अच्छा गुली माड़े कहार किसी क्षति है ना किंतु प्रश्न एबे भी रही जाउछि जे केमिति एते बड़ सुरक्षा लैप्स हला और डोनाल्ड ट्रम्प निजे मध्य सामाजिक सम्मेलन करुछंती दुर्बृत्तंकर विषय रे कहउछंती जे तांकू मारिया पई ये प्रथम उद्यम नुह पूर्व भी एक कथा आमे भी जानि छंती जो समय डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचन प्रचार करथले 2024 मसिया रे पेंसिल्वेनिया रे सही समय भी डोनाल्ड ट्रम्प को ऊपर को आक्रमण होइतिला डोनाल्ड ट्रम्प को कान देकी बुलेट पारी होइतिला और डोनाल्ड ट्रम्प बर्ती जाइतिले तांको कान रे सामान्य आघात लागितिला किंतु परवर्ती समय सुरक्षा तांकर जो माने थिले एस्कॉर्ट करकी तांको सुरक्षा जगह को नहीं जाइतिला और डोनाल्ड ट्रम्प बर्ती जाइतिले तेणु सी प्रथम आक्रमण थिला आ आज द्वितीय आक्रमण डोनाल्ड ट्रम्प को ऊपर हेछि तेणु डोनाल्ड ट्रम्प कहउछंती जे जो माने बड़ बड़ ना थांती बड़ बड़ चेहरा थांती बेस पॉपुलर और नामी दामी थांती तांको उपरक ही साधारणतः लोक मानकर सब बड़े टार्गेट थाए तेणु ये प्रथम नुह ये द्वितीय थर आक्रमण किंतु जी भी आक्रमण पछरे अछि तांकर उद्देश्य कोन ता पछरे आउ केही अछि कि ये सबु जानिबा सबरो नै कि अधिक तदंत मध्य वर्तमान करा जीवो अमेरिका तरफ अमेरिका प्रशासन तरफ पुलिस तरफ धन्यवाद प्रज्ञा सविशेष सूचना पाई Well, thank you very much. That was very unexpected, but incredibly acted upon by Secret Service and law enforcement. And this was an event dedicated to freedom of speech that was supposed to bring together members of both parties with members of the press. And in a certain way it did, because the fact that they just unified, I saw a room that was just totally unified. It was in one way very beautiful, a very beautiful thing to see. A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly and have just released, for purposes of transparency, clarity, I've ordered it to be put out. You probably have it by now, put out on Truth and put out on many of the platforms. A tape showing the violence of this thug that attacked our Constitution, and also showing how quickly Secret Service and law enforcement acted on our country's behalf. Really did a great job. One officer was shot, but saved by the fact that
He was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun, and the vest did the job. I just spoke to the officer, and he's doing great. He's in great shape. He has very high spirits, and we told him we love him and respect him, and he's a very proud guy. He's very proud of what he does, Secret Service agent. And we looked at all of the conditions that took place tonight, and I will say, you know, it's not a particularly secure building. And I didn't want to say this, but this is why we have to have all of the attributes of what we're planning at the White House. It's actually a larger room, and it's much more secure. It's drone-proof, it's bulletproof glass. We need the ballroom. That's why Secret Service, that's why the military are demanding it. They've wanted the ballroom for 150 years for lots of different reasons, but today's a little bit different because today we need levels of security that probably nobody's ever seen before. But everyone owes a tremendous debt of gratitude to the courage of law enforcement, the law enforcement, and working with the D.C. police, and we just spoke with the mayor. And when we're finished, the police chief is going to take over and discuss it also from their viewpoint. But they also performed exactly as they were supposed to, and you see the attacker in different positions, but you also see the attacker totally subdued and under control. So as you know, this is not the first time in the past couple of years that our republic has been attacked by a would-be assassin who sought to kill. In Butler, Pennsylvania, less than 2 years ago, you all know that story, and in Palm Beach, Florida, a few months after that, we came close. We really had, again, we had some great work done by law enforcement. But in light of this evening's events, I ask that all Americans recommit with their hearts in resolving our difference peacefully. We have to resolve our differences. I will say, you had Republicans, Democrats, independents, conservatives, liberals, and progressives. Those words are interchangeable, perhaps, but maybe they're not. But yet everybody in that room, big crowd, record-setting crowd. There was a record-setting group of people, and there was a tremendous amount of love and coming together. I watched, and I was very, very impressed by that. But First Lady and I were taken very well care of, very quickly rushed off the stage. Vice President J.D. Vance, who's here, was likewise beautifully done. He was just saying how quickly everybody acted, law enforcement, Secret Service in particular in this case, but law enforcement. Marco had the same thing. Pete was there. Pete didn't want any help. He didn't want anybody to help him. He doesn't want anybody to help him, but he did get some, didn't you? And I think you also said that it was very impressive. So with that, I'd like to ask Todd Blanche to come up, say a few words, and tell you it's already underway. The man has been captured. They're going to his apartment. I guess he lives in California, and he's a sick person, a very sick person. And we don't want things like this to happen. I think it's very important that I say, though, and I told the representatives of the evening, they did such a beautiful job. It was such a beautiful evening. And again, they're talking about free speech in our Constitution. That's what it's all about, not just White House correspondence. It was really based on free speech in our Constitution. But I said very importantly that we'll do it again within the next 30 days, and we'll make it bigger and better and even nicer. So I just want to thank everybody that was involved. I also want to thank the press, the media. You've been very responsible in your coverage. I will say I've been seeing what's been out. You've been very responsible. So Todd Blanche, I'd like to say a few words, and then we're going to have cash. And then you're going to go on. We can ask, I guess we can take a couple of questions. I want to thank the First Lady that was a rather traumatic experience for her. There was a lot of action taking place up there very quickly. But again, the response time was really incredible.
And we're going to reschedule. We're going to do it again. We're not going to let anybody take over our society. We're not going to cancel things out because we can't do that. We wanted to stay tonight. I will tell you, I fought like hell to stay. But it was protocol. They said, please, sir, because they didn't know there was a lot of action going on, and they didn't know could there be probably a lone shooter, but we'll find out. We'll find out very quickly. They have it very well under control. So I want to thank everybody very much. And Todd Blanche, please. Thank you very much, Mr. President. Tonight you saw the very worst and the very best of this country. You saw the very worst by the actions of that coward that the President just talked about. But you also saw the very best because you saw law enforcement do exactly what they're supposed to do. And you'll see the videos come out, I expect, very shortly, and you'll see law enforcement do exactly what we want them to do. And so I echo what what President Trump just said, that we are extraordinarily grateful and appreciative of the men and women of law enforcement that did their jobs tonight, including one who was injured. This investigation is ongoing. I expect you will see charges filed shortly. The charges should be self-evident given the conduct, but as you'll hear, there will be multiple charges surrounding the shooting, around the possession of firearms, and anything else that we can get on this guy. The investigation is obviously ongoing and just started. There is federal law enforcement already working on search warrants.